Hello dear students. So in the previous lecture we studied how the blood group is determined, in which I have given you some extra information, but that doesn't mean that it will not come in the board exam. It may come, okay? So please study that part also. Right students? So we have completed studying how the blood group is determined genetically because of the three alleles, the genes of the different forms for the same character, that is IA, IB and IO, in which the gene IA and IB are codominant, whereas IO is recessive gene. So we have studied it well. Today we will study the next topic, that is sex determination. Now students, here sex determination means, sex means your gender determination. In case of human beings, we are either male or a female. So what is the factor? What is the thing that decides whether our sex will be male or our sex will be female? Here, sex determination, that is determining the gender of any animal, depends on two factors. First factor which we will be studying, and that is related to our body, is genetic factor. Means the type of genes present in our body. Again, the type of genes present in our body will decide our sex, will decide our gender. There is one more factor in case of animals, some other animals, there is one more factor called environmental factor decides the sex. Yes, you will be surprised when we study that part. मतलब वो animals में उनके बॉडी के जीन्स ये डिसाइड नहीं करते कि वो मेल होंगे कि फीमेल. नो, द एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर will decide they will be male or a female, right? But environmental factor of sex determination will be the second part. The first part which we'll study today is a genetic factor. To understand this, you need to understand the two types of chromosomes. There are two types of chromosomes, autosomes and allosomes. Allosomes are also known as sex chromosomes. Now what is this? Let me explain you. Students, why we are human? We are human because we have 46 chromosomes in our body cells. Again I repeat, body cells. In a gametic cells, we have half number of chromosomes, that is 23. Every animal is that animal, or every living thing is that living thing because of having fixed number of chromosomes. For example, we are humans because our body cells has 46 chromosomes. Potato is potato because it has 48 chromosomes in it. Yes, humans have 46 chromosomes in their body cells. Potato has 48 chromosomes in its body cells. If you know the crab, it has 200 chromosomes. अब यहाँ पे ये paired है. 46 chromosomes means how many pairs of chromosomes? Correct, 23 pairs. 48 means 24 pairs. 200 means 100 pairs of chromosomes. And out of these paired chromosomes, only half of the chromosomes enters in the gamete during the formation of gametes, right? मतलब 46 में से सिर्फ कोई भी 23 chromosomes gametes में जाते हैं, right? So here, now you will be surprised, अरे पोटैटो में तो हमसे 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है हर बॉडी सेल में, एंड क्रैब में तो कितने एक्स्ट्रा है. सी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं होता तुम्हारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड होगी. आर यू गेटिंग मी? क्रोमोसोम ज्यादा मतलब डीएनए ज्यादा मतलब बॉडी और ज्यादा डेवलप होगी? नो, द टाइप ऑफ डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम विल डिसाइड द बॉडी पैटर्न. भले ही हम में 46 क्रोमोसोम्स है हर बॉडी सेल में, क्रैब में 200 है, हमसे बहुत ज्यादा, बट क्रैब का जो डीएनए है, हर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो उतना वेल फॉर्म्ड नहीं है, इसलिए बॉडी उसकी हमारी जितनी डेवलप नहीं है. समझ में आया? ओके, सो हियर आई वांटेड टू टेल यू एवरी लिविंग थिंग इज दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिविंग थिंग बिकॉज ऑफ हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ह्यूमंस में कितने हैं? 46. अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, as I told you, they are in pairs. Okay, I'm drawing it here. Suppose this is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, like this.
Now I'm writing here, suppose it is the first pair of chromosomes and this is the 22nd pair of chromosome. मतलब total कितने हुए students बोलो? 44 chromosomes. Humans में, हम में, in humans there are 46 chromosomes, जिसमें से जो पहले 44 chromosomes है, पहले 44 chromosome मतलब पहले 22 pairs of chromosomes है, they are autosomes. So these are autosomes. Let me explain the difference. And जो last दो chromosome है, last two chromosomes means कौन सा pair students? Correct. 23rd pair are called as allosomes. That is sex chromosomes. अब ये है क्या? What is this? Let me tell you. Autosomes means these are the chromosomes, the DNA which they contain, the genes which are present in them will decide all the body traits. मतलब body character. हाइट क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, बाल कैसे होंगे, आँख कैसे होंगे, नोज शेप क्या होगा, आई शेप क्या होगा, इंटेलिजेंस क्या होगा, डाइजेशन कैपेसिटी, एक्सक्रीशन, किडनी, जो भी बॉडी का कैरेक्टर है, दैट ऑल कैरेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द डीएनए एंड द जीन्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन ऑटोसोम्स, राइट. बट ये जो लास्ट के दो है एलोसोम्स, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, दे विल डिसाइड आवर gender, means they will decide our sex, whether we will be male or a female. Let me tell you right now, if these two chromosomes are X and X, मतलब ये X क्रोमोसोम और ये भी X क्रोमोसोम, ओके. अगर किसी कोई जो एनिमल जैसे कि जो ह्यूमन बॉर्न हो रहा है उसके हर बॉडी सेल के लास्ट के दो क्रोमोसोम्स X and X है, then the gender will be female. अगर यही मेल है तो इसके ये दोनों क्रोमोसोम X and Y होंगे, देन द चाइल्ड बोर्न विल बी मेल. मतलब अगर हमारे एलोसोम्स X and X है तो हम फीमेल होंगे, लेकिन अगर हमारे एलोसोम्स X and Y है तो हम मेल होंगे. अंडरस्टूड? तो बोलो फीमेल होंगे या मेल होंगे, किस पे डिपेंड करता है? क्रोमोसोम्स पे. क्रोमोसोम्स पे मतलब उनके अंदर के डीएनए पे, डीएनए पे मतलब उनके अंदर के जीन पे ये डिपेंड करता है कि हम मेल होंगे कि फीमेल. So is it a genetic factor which determines our sex, which determines our gender? Understood? Okay. So, अब let me explain you in a chart. I hope students you understood what are autosomes and allosomes. Allosomes male में and female में. Male में क्या होते हैं allosomes, sex chromosome XY. Female में क्या होते हैं XX. तो बोलो किसमें होमोजाइगस होते हैं? होमो मीन्स सेम. फीमेल में दोनों भी X and X, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स. बट मेल में एक X होता है और एक Y, हेटेरोजाइगस एलोसोम्स. अंडरस्टूड? नाउ सी हियर, हमने जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया उस पैटर्न से देखते. सबसे पहले आई एम राइटिंग योर पेरेंट. पेरेंट का मैं पहले फिनोटाइप लिखूंगी and then I will write genotype. Suppose parent है male, यहाँ पे पहले female लिखती हूँ and then it is a male. बोलो female parent का क्या होगा genotype? 44 plus XX, right? Students 44, ये पहले 44 pair of chromosomes, right? 22 pairs and XX होगा last 45th and 46th chromosome. मेल में क्या होगा? 44 प्लस XY. अब ये जो पेरेंट्स है ये इनके बॉडी सेल्स है. ये बॉडी सेल्स मियोसिस से डिवाइड होंगे. सेल डिवीजन बाय मियोसिस होगा. मियोसिस में क्या होता है? आउट ऑफ द फुल क्रोमोसोम्स ओनली हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स एंटर इन द गैमेट. तो ये पेरेंट्स प्रोड्यूस करेंगे गैमेट. मतलब 44 में से हाफ दैट इज 22 प्लस ये दो में से कोई भी एक X, ये हो गया फीमेल का पहला गैमेट. और यही बाकी के 22 इधर गए. 22 प्लस बचा हुआ X, ये हो गया दूसरा गैमेट. तो दो एग्स तैयार हो गए फीमेल बॉडी में. आर यू गेटिंग दैट? बट एग्स कोई भी हो एग, इट विल ऑलवेज हैव X क्रोमोसोम ओनली. बट सी इन मेल्स
44 में से 22 प्लस x एंड y में से x आया, सपोज ये हो गया पहला स्पर्म तैयार, दूसरा स्पर्म 22 प्लस y बचा है. Female gamete will be having X chromosome only, but the male gamete, that means the sperm, will either have X chromosome or Y. मतलब 50% sperms में X chromosome होता है, 50% sperms में Y chromosome होता है. अब it depends at the time of fertilization. What is fertilization? When a sperm fuses the egg. ये egg है, ये sperm है, जाके वो egg को fuse करता है. अब there are 50% of the sperm, 50% sperm having X chromosome, 50% sperm having Y chromosome. अभी उनके स्पीड पे डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म पहले जाके एग को फ्यूज करेगा. इफ द स्पर्म कंटेनिंग X chromosome will fuse the egg, the child will be female. कैसे देखो, F1 generation. This is the female egg fusing with the male sperm. 22 plus 22, 44 plus XX. What will be the gender? What will be the phenotype? XX means it will be a female child, that is a girl child. या यही egg इस sperm के साथ अगर फ्यूज हुआ, डिपेंड ना, कोई भी sperm, दोनों में से कोई भी sperm आके इसको फर्टिलाइज कर सकता है. तो here it will be 22 plus 22, 44 plus XY. What will be the gender? चलो, it will be a male, that is a boy child. Or this egg will fuse with this sperm, again 44 plus XX. Or this egg will fuse with this sperm, 44 plus XY. So again girl or a boy. So 2:2, that is 1:1. There is a 50% chance that it can be a girl child or it can be a boy child, depending on which sperm is fertilizing the egg. क्योंकि egg कोई भी हो, egg में हमेशा X क्रोमोसोम ही होने वाला है, सेक्स क्रोमोसोम, बट sperm में X भी हो सकता है या Y भी. So on whose genes the gender of the child depends? Is it dependent on the mother's gamete or it is dependent on the father's gamete? क्योंकि Y chromosome is not present in female's gamete. Y chromosome to have a boy child is present only in male's gamete. So who is responsible for giving birth to a girl or a boy? Is it a female or is it a male? It's a male. It's a father. That is why, like, especially in India, and not only in India, maybe in outside country also, but especially in India, there is a gender discrimination. Even though we say highly educated families, blah, blah, blah. I'm not talking about everyone, but there are few, not few actually, there are very few families where they don't believe on this gender discrimination. Whether they have a girl child or whether they have a boy child, they treat it equally and they get equal happiness for having a child, right? But still there are many families, many people with the mentality that having a boy child is a superior thing and having a girl child it's a kind of tension, etc. What rubbish, right? But and in such families, if a female, पहला बच्चा भी गर्ल चाइल्ड हुआ, दूसरा भी गर्ल चाइल्ड हुआ, तीसरा भी हो रहा है गर्ल चाइल्ड हो रहा है, so they start blaming a female. अरे, you can't give birth to a boy child. Now you tell me, on whose genes it is dependent? It's not at all dependent on the female, not at all dependent on the mother's body. It absolutely depends on the father's body, the father's gamete, that is sperm containing Y chromosome. जब तक female body के egg को fuse नहीं करेगा, fertilize नहीं करेगा, it can't give a birth to a boy child. Understood? So I hope students, you understood the sex determination because which depends on the genes, whether the gene X or Y. Okay? So this is called sex determination in humans, which depends on genetic factor. Now we will talk about sex determination which depends on environmental factor. तो पहला हमने sex determination depending on genetic factor, for example humans, study किया, right? Now we'll study sex determination depending on environmental factor. Yes, the environmental factors such as temperature will determine whether the child born will be male or a female. Very interesting. Let me give you an example.
For example, in case of reptiles. Students, you know reptiles, these are the creeping or crawling organisms. Their limbs are shortened so they cannot lift their body and they cannot walk or fly, right? So they can only creep and crawl. So reptiles में two example I am giving you here, turtle and lizard. Students, we have studied it in 9th standard. Reptiles are oviparous animals. What do you mean by oviparous? Egg-laying animals, right? Egg-laying. They lay eggs, then their eggs are incubated. What is incubated? Incubation means eggs are given body warmth by the female parent, or in some cases male parents gives the warmth. Female parent सिर्फ egg lay करता है, male parent उसको fertilize भी करता है, body warmth देके incubate भी करता है. Okay. Incubation की वजह से अंदर जो embryo है, जो baby वो develop होके egg hatch out करके फिर birth लेता है, right? तो in turtles high incubation period temperature, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर मतलब जब इंक्यूबेशन होता है एग का, एग को जो वार्मथ मिलता है, टेम्परेचर मिलता है फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द बॉडी, व्हाटएवर, अगर वो टेम्परेचर हाई हो इट विल रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड. लेकिन अगर वही टेम्परेचर लो हो, इंक्यूबेशन के वक्त अगर टेम्परेचर लो मिल रहा है एग को, इट विल रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड. इज इट डिपेंडेंट ऑन जीन्स एट ऑल? नो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर. Same here, in case of lizard उल्टा है. High temperature during incubation of the egg will give birth to male, and low incubation temperature give birth to female child. Means if you observe here, the gender, the sex of the offspring, the child, is not at all dependent on any genetic factor. It depends on environmental factor such as temperature. Okay. And now one more example. This was the first example. Okay. One more example. Snail. We know it is a kind of mollusk. We have studied non-chordate phylum, mollusca, soft body animal covered with a shell. Snail को shell होता है ना, right? In case of snails, they can show sex reversal. Here sex reversal means they can change their sex during the lifetime. Yeah, means they are born as a male and due course of time they modify into a female. Means internally the male reproductive organs will modify, or along with male they will develop the female reproductive organs also. Now how it is possible? It is possible because of the hormones secreted in their body. Snail which is born as a male will eventually develop into a female. Not only snail, there are some fishes also. They can show sex reversal, changing the sex during the lifetime. Now why? See, environment. The nature is so thoughtful about every animal, every living thing, right? Nature never does any kind of discrimination with any living creature. Now here, it happens in only certain cases. For example, in a population of snails. Suppose there are 100 snails together. उसमें से there are 80 males and only 20 females है. बाकी females due to some reason मर गए, develop नहीं, whatever. Now is it an equal gender ratio for mating? अब sexual reproduction के लिए 80 males है लेकिन सिर्फ 20 females है. Are you done? In such case, some of the males can reverse their sex, can change their sex, and they can become a female to make the ratio quite equal for mating purpose. Understood? So here also it is not dependent on genes of the body or the chromosomes of the body or the DNA of the body. It absolutely depends on the environmental factor, the need of the nature. Population में gender equality नहीं है तो they can do sex reverse, sex change. Okay? So I hope students you understood the today's point, that is sex determination, under which we studied two topics, genetic factor and environmental factor, right? So whatever we studied today, you're going to write down all the notes, okay?
Now students, let us move on to the next topic. Acquired traits and inherited traits. First of all, what do you mean by traits? Body characters. It can be a physical body character or a mental body character. Now what is that? Difference between आता है, mostly ये exam में इसके ऊपर difference between आता ही है for 3 marks. So the first point, what is acquired trait? The body traits, the body characters which cannot be inherited. What do you mean by inherited? Cannot be transferred from parents to offsprings. Okay, these characters can't be transferred from parents to offsprings, but are developed in response to environmental changes. Means these are the body characters which are not due to genes, which are not due to any change in the genes. These characters are not due to any genetic changes. These are the characters which are developed during the lifetime in response to the environmental changes. Let me give you example. For example, there is a beetle, a kind of insect, who is in such a region where there is a lack of food. Okay, because of lack of food, that is called starvation. Starvation means उसको proper sufficient खाना नहीं मिल रहा है, like leaves वगैरह नहीं है. Okay, सारे trees polluted area में suppose ये beetle है, and pollution की वजह से सारे trees के leaves fall off हो गए हैं, and उसको proper leaves नहीं मिल रहा है खाने के लिए. Means due to starvation, there will be it will be suffering the problem of reduced weight. खाना नहीं मिलेगा तो obviously weight loss होगा, right? अब insect है but still they will also have a problem of reduced weight due to starvation, due to lack of food. But if it is giving birth to a new beetle, its offspring, and suppose एक plant मिल गया जहाँ पे enough food है, it will have it. By birth it will not have the problem of reduced weight. क्योंकि weight reduce होना is only a change in the body cells. Is there any change in the genes? No. So these are the characters which are developed in response to the environmental changes. They cannot be inherited because these characters does not bring any change in the genes. These character brings change only in the body cells. Okay. One more example I'll give you. Suppose there is a couple, both are very fair. उनका skin tone fair है. मतलब उनकी स्किन में मेलाटोनिन, वो जो ब्राउन कलर का पिगमेंट है, वो सीक्रेट नहीं होता है. बट दे आर अ काइंड ऑफ लेबरर्स, लाइक रास्ते पे पत्थर वगैरह फोड़ते हैं ना, अब वो कंटिन्यूअसली रोज धूप में काम कर रहे हैं. धूप में काम कर करके उनकी स्किन पूरी टैन हो चुकी है, एकदम ब्लैक हो चुकी है, राइट? उनका नेचुरल कलर फेयर है स्किन का, राइट? बट धूप में काम कर करके उनका स्किन टोन ब्लैक हो गया. Does it mean that उनका जो बेबी बॉर्न होगा will be black in with a dark skin color? No, क्योंकि जीन्स फेयरनेस के ही है ना. वो जो स्किन टोन उनका चेंज हुआ है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ड्यू टू इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंज. आर यू गेटिंग दैट? वन मोर एग्जांपल. देयर इज अ कपल, दोनों में मदर एज वेल एज फादर, बोथ आर हैविंग कर्ली हेयर. मीन्स बोथ ऑफ देम हैव अ जीन इन देयर बॉडी बिकॉज ऑफ विच द हेयर आर कर्ली. तो उनका बेबी जो बॉर्न होगा, ऑब्वियसली बेबी विल बी ऑल्सो बॉर्न विथ कर्ली हेयर ओनली. ना फॉर एग्जाम्पल, बिफोर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, वो जो दोनों है हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, उन्होंने स्ट्रेटनिंग करवाया, कर्ली हेयर को स्ट्रेटन करवाया. बट यू टेल मी, स्ट्रेटनिंग इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस which brings changes only in the external hair cells, that is a body cell. Is it bringing any change in the genes which develops this curly hair? No. तो दोनों ने स्ट्रेटनिंग करवाया. चलो, दोनों को कर्ली बाल पसंद नहीं है, स्ट्रेटनिंग करा. अब उनका जो बेबी बॉर्न होगा, will it be born with a straight hair? No, the baby will be born with curly hair only because of the genes. Okay? तो ये एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो
बॉडीली चेंज करवाते हैं, वो जीन्स में कोई इफेक्ट नहीं करते. What he did, he took a mouse with a long tail. He took a pair of mice with a long tail. वो साइंटिस्ट ने क्या किया, वो जो मेल एंड फीमेल माइस थे दोनों के टेल कट कर दिए, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने दिया, एंड उनका जो बेबी माइस रिप्रोड्यूस हुए उनका टेल मेजर किया. अब पेरेंट्स के टेल कट थे, मतलब द पेरेंट्स वर विथ शॉर्ट टेल ड्यू टू कटिंग ऑफ, बट द बेबीज वर बोर्न विथ लॉन्ग टेल ओनली. तो उसने क्या किया, वो साइंटिस्ट ने वो जो बेबी माउस प्रोड्यूस हुए वापस उन दोनों का टेल कट किया, उनको रिप्रोड्यूस करवाया, उनकी बेबीज, फिर उनके बेबीज, फिर उनके बेबीज, ऐसे उसने 20 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किया. हर नया जनरेशन का माउस जो रिप्रोड्यूस हो रहा था उसके टेल्स कट कर दिए, उनको रिप्रोड्यूस करवाया, उनके बेबीज देखे, फिर उनकी जनरेशन देखी. ऐसे उसने 20 जनरेशन तक ऑब्जर्व किया, एंड एवरी टाइम ही ऑब्जर्व्ड there was no change in the length of the tail of the baby mice produced, because cutting the tail is a acquired character. मुझे हेयर लॉन्ग नहीं चाहिए, शॉर्ट चाहिए, मैं काट दूंगी, बट दैट डजंट मीन जो जीन है मेरी बॉडी में वो बदल जाएगा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल विद दीज मेनी एग्जांपल्स फॉर acquired traits. So acquired traits are the body characters which are developed in response to the environmental changes. They does not bring any change in the genes, they only bring change in the body cells. Okay, यहाँ पे उल्टा है. These are the body characters which develops due to genetic changes. यहाँ पे genes में change होने की वजह से ये body character develop होते हैं. They bring about changes in body cells as well as genes. क्योंकि जीन्स ही चेंज हो गए तो ऑटोमेटिकली बॉडी सेल्स पे इफेक्ट होगा एंड कैरेक्टर विल बी चेंज. लेट मी गिव यू एग्जांपल हियर. देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ अ रेड बीटल, सपोज ऑन अ ग्रीन प्लांट. पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल्स ऑन ग्रीन प्लांट. Wait a minute. Suppose these are the beetles population. ये group of beetles. Beetle means kind of insects which live on the trees and eat up the leaves of the trees. Now all of a sudden, because of gene mutation, students, we have studied gene mutation, sudden change in the gene code. In a population of red beetle, there was a green beetle produced. अब ये blue color दिख रहा है, but just assume it as a green. Okay. So in a population of red beetle, reproduction of a green beetle is a inherited trait. क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल ये जब प्रोड्यूस हो रहा था किसी दो रेड बीटल से ये प्रोड्यूस हुआ, राइट, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये पैदा हो गया. बट ये जब प्रोड्यूस हो रहा था ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ जीन म्यूटेशन, जेनेटिक कोड चेंज हो गया एंड उसका बॉडी कलर ग्रीन हो गया. अब ये जब किसी और रेड वाले के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो ग्रीन कलर इज अ डोमिनेंट कलर, उनका जो बेबी होगा वो भी ग्रीन होगा. ग्रीन ग्रीन ग्रीन. आर यू गेटिंग दैट? सो ऑल ऑफ अ सडन ग्रीन बीटल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया. अब ये क्यों? जीन म्यूटेशन क्यों हुआ? सी नेचर ऑब्जर्व्स. ये ग्रीन लीफ पर अगर रेड बीटल होंगे, रेड कलर ऑन द ग्रीन लीफ विल बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द बर्ड्स एंड रेड बीटल्स वर कैप्चर्ड मोर, राइट. सो दे विल बी किल्ड इजीली बाय द बर्ड्स एंड उनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा था. इसलिए ऑल ऑफ अ सडन में जीन म्यूटेशन हो गया, ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस हो गए. अब ग्रीन पत्तों पर ग्रीन बीटल्स, कैन इट बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द बर्ड्स? नो. बट दिस ग्रीन कलर of the skin is inherited into the coming generation and is transmitted into the coming generation. So these are inherited traits. So we all have two types of body traits, two types of body characters, acquired characters and inherited characters. Okay students, so I will stop here today and let me tell you, with this topic we have completed the part called heredity. The next part of the chapter is evolution, which is actually omitted only for this year, but I'm going to teach it. We'll stop it here today. Please complete the notes and keep on studying. Thank you.